तेरे नाम। तो गाइस कलर देख लो आप, बहुत अच्छा कलर है, बहुत ब्राउन शेड है, ब्राउन के साथ आइस ब्लॉन्ड कलर है। आप You're never gonna make it. ओके सो बाय द वे लाइट अच्छी आ रही है, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपने बिफोर और आफ्टर देख लिया कितना बॉम्ब है। सो आज एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे बाल के साथ। सो देखते हैं कौन सा कलर आता है और क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके पहले मैंने रात को हेयर ऑयल लगा के सोया था, तो उसके लिए मुझे वॉश करना पड़ेगा पहले हेयर ऑयल, और फेस पे भी ऑयल आ जाता है तो फेस वॉश भी यूज करना पड़ेगा। सो जो हम लोग शैम्पू यूज करेंगे वो है मूचस्टैक का। ओके सो ये मूचस्टैक का हर्बल शैम्पू है विद इनबिल्ट कंडीशनर, और इसके जो पॉइंट्स है जो इन्होंने हाईलाइट किए, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयरफॉल और नेचुरल कंडीशनर। सो इसके नाम में विद इनबिल्ट कंडीशनर है। भाई मैं कंडीशनर यूज नहीं करता, बट इसके अंदर है, ये नेचुरल है, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऊपर से ये SLS और पैराबीन फ्री है, सो बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोगों को पता है, आप लोगों का भाई हमेशा जो नेचुरल रहता है, हर्बल चीज़ रहता है, वो ज़्यादा यूज़ करता है और बताता है आप लोगों को कि इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको रूट से भी लगा सकते हो। सो या इसको यूज़ करते हैं, और इसके फेस वॉश को यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत बॉम्ब है, हाथ में पकड़ने से मालूम पड़ जाता है प्रीमियम प्रोडक्ट है। और दूसरे प्रोडक्ट में ये नहीं मिलेगा, लाइक ये खोला, सो अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और जब यूज़ नहीं करने रहेगा तो मैं इसको वापस लॉक कर सकता हूँ। सो लेट्स गो। सो पहले इसको हाथ में लेंगे अच्छे से, आप इतना ले सकते हो क्या, और इसको अच्छे से हाथों में इमल्सिफाई करो कि जब तक इसका लेदर बन जाएगा। लेदर बनने के बाद आप बाद में इसको हेयर में लगा सकते हो। ओके सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इसको बाय कैसे करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं। तो ये प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप जाके बाय कर सकते हो और चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रोडक्ट बाय करने का। बाय द वे रेडी होके ड्राई हो, इसको थोड़ा ड्राई कर देता हूँ, फिर नीचे मिलता हूँ। ओके सो लेट्स गो। Hey yo, what's up bro gang? It's your boy Karan bro. Alright. So मुझे पता है पिछले वाले वीडियो में मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, इसकी वजह से वो वीडियो अच्छा नहीं बना। और इस वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत बॉम्ब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आज अपन हेयर कलर कराने वाले हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 1 लाख होने वाले हैं। सो हो रही अपनी गाड़ी, ये अपना कैमरा, चलो चलते हैं, शॉप में मिलते हैं। ओके सो मेरा भी हेयर वॉश हो गया है, और अभी पहला हेयर कट कर रहे हैं, और ऊपर से लेंथ भी कम करेंगे। फिर देखते हैं इसके ऊपर कौन सा हेयर कलर जाएगा और ये कौन सा सजेस्ट करते। सो चलो चलो चलते हैं और देख।
your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, oh baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control, all the lights in the space keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder. ऑलराइट, सो हेयर कलर हो गया। और हेयर कलर कौन सा है? इन्होंने मिलके हेयर कलर किया है। तो ये बताएंगे आपको हेयर कलर के बारे में। हम लोगों ने अभी जो हेयर कलर किया है उसका नाम है आइस ब्लॉन्ड। 6 घंटे की मेहनत है, बहुत टाइम लगा है हेयर कलर के लिए। 3 बार एप्लीकेशन किया तब जाके ये कलर आ गया है। तो गाइस कलर देख लो आप, बहुत अच्छा कलर है, बहुत ब्राउन शेड है। ब्राउन के साथ आइस ब्लॉन्ड कलर है, आप देख सकते हो है कलर। भाई के नेक्स्ट पोस्ट में देख लेना आप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @Karan bro। और इन्होंने पूरा हेयर कलर किया और इन्होंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप। ओके पीस, थैंक यू सो मच। सिनेमैटिक शॉट्स देख लो, बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds.